Namaskar. I am Dr. Sunny Narula, consultant pediatrician at Motherhood Hospital, Mohali. Today we will discuss about three most common complaints with which parents of a newborn baby come to us. First one is parents usually come to us with the complaint that बच्चे की आवाज़ आती रहती है, नाक में से गड़गड़ की आवाज़ आती रहती है, छाती में से गड़गड़ की आवाज़ आती रहती है। सो जब वो हाथ लगाते हैं, उसको बेबी को उठाते हैं तो चेस्ट में से उनके हाथ पे भी फील होता है कि आवाज़ आ रही है चेस्ट से। Most of the time this is nothing but a nasal block. The nasal bone of a newborn is not fully developed and the breathing hole is quite small. So कुछ भी थोड़ी बहुत secretions होती हैं वो वहाँ पे फंस जाती हैं, तो that produces a sound during breathing which parents interpret as coming from the chest. This is nothing but a nasal block. If the child is well, child is taking feeds well, कोई breathing rate उनका fast नहीं है, तो we don't do anything. We can use, we normally prescribe saline nasal drops which can be put in the nose for as much as time required, and we normally reassure parents that nothing is serious about it. Second commonest complaint of parents is that the child passes excessive amount of gas. काफ़ी गैस पास करता रहता है जी, सारा दिन गैस पास करता रहता है। अगेन दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना इन अ न्यूबॉर्न। गैस कैसे बनती है बच्चे में कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सकिंग करता है तो फीड के साथ साथ थोड़ी सी एयर भी अंदर ले लेते हैं, तो एयर या तो वो बर्फ के थ्रू बाहर आएगी या वो नीचे से गैस के थ्रू बार बार वो बाहर निकलेगी। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल and that gas doesn't cause any problem to the newborn. Again, we reassure the parents that nothing is serious, and we should avoid giving any medication which is anti-gas. Over the counter there are so many medicines available, parents and many parents use it, but since it is a natural phenomena, it's a normal phenomena, any medication to a newborn for gas should be avoided. Third commonest complaint specifically in third-fourth day of life is कि बच्चे के face पे, body पे there are some rashes which have developed. Normally these rashes are small rashes scattered over whole body and slightly red also. There may be some fluid also in these rashes. These are normal rashes. These are called erythema toxicum. These usually come between day 2 or day 3 of life, और फिर चौथे पाँचवें दिन अपने आप ठीक हो जाते हैं। Unless and until the rashes are severe, से पूरी बॉडी इन्वॉल्व की हुई है बच्चे की, कोई उसमें ग्रॉसली कोई पस पॉइंट्स बने हुए हैं या बच्चे के साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं रैशेस के साथ, लाइक कोई फीवर आ रहा है, बच्चा सुस्त है, फीड नहीं ले रहा, ऐसा अगर कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं है तो दीज रैशेस आर नॉर्मल in the first week of life and they will vanish after first week of life. That's all. These are the three conditions we discussed today. On next video we'll come up with another educative videos about your baby. Thank you so much.